Welcome after the morning tea break. We are going to start the session after the morning tea break. The time is 10:45 and date is 1st of December 2024. And the subject expert and resource person for this session is none other than my friend Mr. J.K. Singh. Yes, sir. Please continue. Thank you, sir. It is visible, na? It is visible for everyone? Okay. Yes, sir. Now do the next topic that is related to the bookkeeping and accountancy. This topic carry 3 marks in your examination. Topic is very easy, very easy. But you have to understand some technical word in relation to the accounting section. Table of the content, bookkeeping, primary and second subsidiary book, accounting, analysis of financial statement, and cost accounting. What is the bookkeeping? Bookkeeping is generally we know very well. Then suppose you have some money in your pocket and you have to go to the marketplace. Then you have to expend some money or you have to left how much in your money in your pocket. That you have to do some calculation. No? You do the calculation that how much you have taken the money and how much you have spent and how much money you have left out. Similar way, if any business carried on, then they have to record the transaction. They have to record the transaction from the where they get the revenue, whatever revenue they have generally received, and where they have do the expenses and for what purpose. Either they have put the expenses for the expenses purpose, or they have put the expenses for the purchase the capital expenditure. They have purchased the capital expenditure, or they have purchased the machinery, or they have put the some revenue expenditure that is they have given some salaries to the employee. Different classification they have. Similar way, what is a bookkeeping? Bookkeeping is a recording, classifying, and summarizing. First you record, then we have to classify, then summarizing all the business financial transactions systematically to know the profit or loss for a specific period of time. If you do the bookkeeping now, then it is very easy to understand what is the profit or loss during the end of the period. Otherwise, it is very difficult how to calculate. We are very difficult to calculate how much expenses we have incurred, or from where we have received the revenue and what type of revenue we have received. That is why we generally do the bookkeeping. And what is the objective? Show the permanent record of business. If you do the bookkeeping, then permanent record of the business generally show it. Then know the profit or loss. Then also know the financial position of the business. And last, we have the final step. We have to determine the tax liability. For tax liability, generally they require the bookkeeping. Other than how you determine the net profit. The last step we have a net profit. Based on the net profit, we determine the tax liability. Then come to double entry bookkeeping. Earlier than I seen that before 4 decade, that we have a single book entry system. That we generally call the by khata, or we have, I think you people very well seen that the red book. Generally the small merchant, they generally carry the red book, or we generally call the by khata. But that in single book entry system is very difficult to carry out the entry or to maintain the accounts. Then they come to the concept of double entry bookkeeping system. In double entry bookkeeping system, as is very well aware, you people, I think all you people have a bank account. In bank account, you have a passbook. In passbook, you have they have written one side of debit and other side of credit. That's a double entry. One is a debited and other should be the credited. Then a system of bookkeeping in which an accounts require a corresponding and opposite entry. If you're putting the debit, then you have to put the credit sum in part. That is where there must be a match. Debit and credit should be a match to the different accounts known as debit, order, and credit. For sake of knowledge, how they have put the entry, they are putting the entry cash to sales. Where they have from where the cash, from where the sale, do not forget it. Only see, we have to following the double entry system. How we record a double entry system? We have to put the two account, and one should be put in the debit and other we have put at the credit side. Then we have a accounting cycle. We have to follow the accounting cycle. In accounting cycle, what we have to see? Transaction. Sir, what is a transaction?
Transaction is an invoice. When you purchase anything, you are receiving the invoice. When you sell anything, you have to create the invoice. That is transaction itself. Based on the invoice, we have to prepare the journal entry. Based on the invoice, we have to prepare the journal entry. We have to post the journal entry, and then we have to then we have to see the trial balance, then worksheet, adjustment entry, financial statement, then closing the books. We people are very well aware we have to close the books in every year. Every year we have to close the books in 31st March. Then what is the bookkeeping accountancy? Accountancy is a bookkeeping plus accounting is known as accountancy. Before two decade, before we to two decade, not a two decade, 1.5 decade. Before 1.5 decade, we generally prepare this all the recording, bookkeeping recording, or generally we do the manual basis. We do the manual basis. So how the manual basis we generally do? We generally first create based on the invoice. We generally call the transaction. Then based on that invoice, we generally create the journal entry. We generally post the journal entry, and based on the journal, we have to create the ledger. Based on the ledger, we have to create the trial balance, and based on the trial balance, we have to create the final account. In final account, they consider the trading account, profit and loss account, and balance sheet. These are generally we generally do in the manual system. But after this manual account is gone out, we have come to the software. I think you people very well aware Tally is the most popular software, very popular software Tally. In Tally, we generally do first we create the ledger, then after creating the ledger, we pass the journal entry, and all other work it get automated. We do not require to do any final account. We do not require to any trial balance. All the automated system. We only facing the challenge to create the ledger. After creating the ledger, we have to simply pass the journal entry. That is a software system. Then what is the difference between the bookkeeping and accounting? So bookkeeping is a record of transaction in the books of original entry. Accountancy mean classification, analyze the business transaction. You have to analyze and classify. Bookkeeping is a routine and clerical work which does not require any specific knowledge and skill. Accountancy is analytical and need specific knowledge and skill. Then who will do the accountancy? Generally do the chartered accountant or cost accountant. They have some analytical skill for developing their profession. They get this analytical skill from their profession itself. They have a knowledge to do the accountancy for their specific knowledge. Then transactions are recorded immediately when they take place. If you have received the invoice, or if you issue the invoice, then generally you have to make the transaction for recording the bookkeeping. Preparation of final account and balance sheet generally prepare at the end of every year. At the end of final account statement, we generally prepare the balance sheet at the end of the year in relation to the accountancy. Then we have a accountancy principle. When we do the accountancy, there should be some base. No? For base is a accountancy principle. In accounting principle, we have a three part. One is the accounting assumption, accounting concept, and accounting constraint. In accounting assumption, we have a four part: money unit, economic entity, going concern, and time period. This is four part in accounting assumption. Similar way, we have accounting concept. In accounting concept, we have a four part: revenue recognition, matching principle, full disclosure, and historical cost. Similar way, we have accounting constraint, methodology, conservatism, consistency, cost benefit, and objectivity. We will do one by one as an illustrative. Come first is the business entity concept. This concept is very important. Business entity concept. In business entity concept, what they say out? This concept assume that owner and business are two different entities. You and your business is two different entities. It means that for the purpose of accounting, the business and its owners should be treated as a separate entity. When we do the accounting, you always treat that you are different from the business. Sir, how it is possible? Sir, when you in business entity concept says that when you receiving the cash, when you putting the capital, when you putting the cash to your business,
When you have a cash, you're putting the cash in your business. Then, as per business entity concept, they says that you are giving the loan to the business. You are giving the cash, but as per business entity concept, you are giving the loan to the business. In that case, our entry should be we generally create the entry as account to capital account. We after we come to the later on, we come to that how to create the entry, and you understand is a better way. Normal, for the sake of understanding, for business entity concept, you have to always understand that owner and business are two different parts. Then come to the money measurement concept. State that only those transactions are happening in the organization which can be expressed in money. When we can express this money, then we can measure at the money measurement concept. How we can see sale of good or payment of expenses or receipt of income are recorded in the books. When you do the sale or when you do the payment or when you receive the income in money, then only it is recorded in the book. It says by money measurement concept. Then come to the going concern concept. Going concern. Assume that business firm would continue to carry out its operation indefinitely. Indefinitely means can never be ended for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. If you have settled the business would be continuity form. You are at present you are the owner of the business. After you will expire, then your son will become owner. In this way, the business will be a continuity form. That says by the going concern concept. This is an important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of the asset in the balance sheet. Then we have accounting period concept. Accounting period. We know very well, we know our accounting period start from 1st April to 31st March. Accounting period start from 1st April to 31st. But some of the cases, either we have merger or amalgamation. In some of the cases, the accounting period will be start from the 1st January to 31st. Some of the cases. But normal cases, we generally follow 1st April to 31st. Accounting period refer to a span of time at the end of which financial statement of the enterprise are prepared to know whether it has earned profit or loss incurred during that period, what the exactly the position of the asset and liability at the end of that period. Why we generally follow the accounting period? We generally follow the accounting period at the end of the year. We can come to the conclusion how much profit or gain we have made, profit or losses, and what is exactly the position of the asset and liability at the end of the period. From where we get the profit and loss? From profit and loss, we get the profit and loss account itself. And where we get this position of the asset and liability? Through the balance sheet. Then we have a cost concept. The cost concept requires that all assets are recorded in the books of accounts at the purchase price, at their purchase, which include cost of acquisition, or we can say transportation, installation, and making the asset ready to use. Till the asset ready to use, you have to include all the expenses, either cost of acquisition or transportation or installation. There, we already clear at the first slide that we have to follow the double entry system. That is a dual aspect concept. Dual aspect is the foundation or basic principle of accounting. This concept states that every transaction has a dual or we have a twofold effect and should therefore be recorded at two places. Two places mean one is the debit side, other is the credit side. In other words, at least two accounts will be involved in recording a transaction. When we record the transaction, there must be a two account. One is a debit and other is a credit account. Then revenue recognition concept, or we can say revenue realization concept. The concept of the revenue recognition requires that the revenue of the business transaction should be included in the accounting record only when it realized. Otherwise, you can't record a transaction.
When it realize revenue required, then you put to the in the books. Otherwise, you can't book in the. If you're putting the, if suppose the revenue is not realized and you're putting the revenue in the books, then the profit will be increased. Profit will be increased, then you have to pay the tax more. Then account realization revenue recognition concept says that when revenue should be recognized, then only you have to put the transaction in your books. Otherwise, you can't do the transaction. Then we have a matching principle. Matching means the process of ascertaining the amount of profit earned or losses incurred during a particular period involved deduction of related expenses from the revenue earned during that period. In our accounting, if you prepare the account, if you have, you all are engineering background, when you are already filing the income tax return, some of the how you are filing the income tax return, then in that you are receiving the profit and loss account or balance sheet. So in that they will follow the generally matching concept. They generally follow the matching concept. Right? They generally so that what the profit or losses will incur as well. They also putting the expenses in relation to what the profit or losses you have incurred. Both in matching concept, you have to create the profit and loss account. In debit side, we generally give the expenses what we have incurred during that revenue earned, and in credit side, we generally put the revenue which is incurred. Then we have to come to the full disclosure concept. Full disclosure. The principle of full disclosure require that all material and relevant facts concerning the financial performance of enterprise must be fully and completely disclosed. Here, sir, where we have to disclose? In the financial statement. Or what is a financial statement? In financial statement, we have a four part. One is the profit and loss account. Then we have a cash flow statement, we have a balance sheet, and other notes to account. These are four parts come under the financial statement. There should be a completely full disclosure. When you do the full disclosure, then only the external party. We are the external party. Suppose some company, suppose you have Infosys company or Tata company, they come to the financial statement. Then we are the external. We generally buy the share based on the analyze the financial statement. When they have created the financial statement, it's a full disclosure. Then only we can analyze the company's is a profit or profit position or loss position. Then only we can invest in that company. That is why full disclosure says that you have to put the all the part in when you are creating the financial statement. Then come to the consistency concept. This principle states that accounting policies and practice followed by enterprise are uniform and are consistent over a period of time. Uniform means, suppose some person want to create an accounting. Suppose you're recording a book, you're recording a transaction in a book, and first month you are taking the base of some accounting standard, and second month you are changing the base of the accounting. No, if you're taking the first month base of the accounting standard, same base you have to follow during the complete year for the recording of transaction. That is why they have said consistency concept. You have to make the consistent list. Then we have a conservatism. The concept of conservatism requires that profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for the in the books of account. Suppose if you have a if they are expected to earning, then we can't record in the book. But if they are expected to incur losses, then we have to record the transaction in the books. Who said by conservatism concept. Then we have a materiality concept. The concept of materiality required that accounting should focus on material fact. Which fact? Material fact. Sir, where do we get the material fact? We can get the material fact from the invoice. From the invoice, we generally prepare the invoice. When you purchase anything, we generally receive the invoice. When we sell anything, we have to issue the invoice. The invoice, we have a material fact. From invoice, what we have to see? We have to see nature of the expenses and the amount involved. Nature of the expenses incurred or nature of the purchase, anything. In invoice, we have to clearly understand what is the nature and what is the amount involved in there. Then come to the objectivity concept. The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner
free from bias of the accountant. You can't manipulate anything and other. This can be possible when the transaction is supported by verifiable documents and vouchers. We are the auditor. When people are recording a transaction, and we have to verify the transaction, we are the auditor. We have to do the audit of the financial statement or any other audit. Then what is audit? What is the mean by audit? Audit means you have to verify from the any supportable document. Supportable document should be anything. Either you have an invoice or anything. Suppose you have shown the in your book that you have any purchased any land and building. In land and building, when we verify, when we do the audit, then we require what we require the deed. We require the deed. We saw the deed. We have to verify that from that purchase the land that is recorded in the books. That is the objectivity concept. This much concept you have to remember. Anyone have any doubt related to any concept? Please come forward. Unmute your mic. Please come forward if any doubt from any concept. Sir, last one, objectivity concept. Objectivity concepts says that if you recording any transaction, the transaction should be free from bias. You can't manipulate you can't do any transaction which are not in any supportable document. To have a supportable document, then only put the transaction. Otherwise, you can't put any transaction in the books. Clear? Clear? Yes or no? Sir, consisting concept. Consisting function, I said, na, when you suppose you are recording a transaction, suppose you have recorded transaction. First month you have, if you record transaction, there should be some base of record transaction. The base should be the same during the tenure of the period. And first month, and that should be you have to follow till the end of that year. That is a consistency. Clear? Clear, everyone? Okay. Then we move to the next part. Next part is the accounting terms. In accounting terms, we have a capital. So what is the capital? That cash we have put it in the business. Generally, in technical word, we call the capital. Debtor. Suppose you have sold someone some good, and you are able to receive the amount from that person. That is a debtor for you. That is debtor for you. Then you are a creditor. Creditor means when you purchase something, then he is a creditor for you. The expenses normally incur the expenses, either it could be a direct expenses or it may be an indirect expenses. Wages are the direct expenses related to the production. Salaries are the indirect expenses related to the administration. Then we have a drawing. Suppose you have a capital, and from capital we want to draw some amount. That is a drawing. Then we have come to the asset. In asset we have a different part. In fixed asset we have a two part. One is the tangible, other is the intangible. The asset which you can touch, at land and building, plant and machinery, that come under the tangible. Intangible, patent, copyright, know-how, anything which you can't touch, that is come under the intangible asset. Then we have a current asset. In current asset, we have the asset which is converted into cash within a 12 month. Within a 12 month, that is a debtor or cash, bank, all are come under the current asset. Then come to the liability. In liability, we have a fixed liability. That the liability which take the more than 12 months, that is a fixed liability. The liability which we pay within a 12 month, that is the current liability. Clear every terminology? Clear every terminology? What is the exact difference between asset and liability? Asset and liability. Asset means you have a sampatti. Sampatti is an asset, and when you pay the something, suppose you have purchased anything from the market, and you have to pay the something. In return, you have to pay. You have not paid. You have paid later on. That is a liability for you. Clear, ma'am? Clear? Yes or no? Yes. Please elaborate. Which one? So can you explain debtor Liability. and creditor once again? Which one? Debtor. Debtor and creditor. Debtor means when you sell the good, that is a debtor for you, and you purchase from other person, that is a creditor for you. You selling, that is a debtor for you, and you purchasing, that is a creditor for you. Clear? Sir, drawing. Drawing, when you have a capital,
then from there you will withdraw the some money. That is a drawing. You have a business capital, na? There you withdraw some money. That is a drawing. Clear, everyone? Then we move to the second part. Then we have a subsidiary book. Subsidiary book, we have a two part. One is a cash book, other is a subsidiary book. Earlier we have to create this book, cash book or other stuff. Now we have said that we have an automated software system that automatically created all this book. One second. In cash book, we have a double column, a single column, double column, triple column, and petty cash book. Petty cash day-to-day expenses we generally record in the petty cash book. Then we have a other subsidiary book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, journal proper. These generally we generally create before 2 decades ago. Now we are automated. In software you find automated system. Then come forward. Accounting furnish data on. Yes, sir. 1 minute, sir. There is an important instruction from the observers. Mr. Anil Bansal, last warning for you. No attendance can be given for the fan, cupboard behind you, scenery, or anything else. They may be costly, but attendance cannot be provided for fan, table, or anything else, or a cupboard or any painting. If your face is not visible, you will not be allowed to attend the class as per the instructions of the observer. This is a last warning for you. Your full face should be visible. Sir, am I audible to you? Turn your screen towards your face. If not possible, please leave the class. We cannot continue with this indiscipline again and again. Yes, sir. Sorry to interfere, so please continue. Thank you, sir. Please come forward, everyone. Accounting furnishes data on. All of the above. All of the above. All That long-term asset that has no physical existence but possesses a value is known as. Intangible. Correct. Very good. The asset that can be easily converted into cash within a short period, that is a 1 year or less, is known as. Current asset. Very Current good. asset. current assets. At the balance sheet date, the balance of the accumulated provision for depreciation is Transfer to depreciation account. transfer to depreciation account. Very good. If we take good for own use, please focus the word own use. We should Debit drawing account, credit purchase. Debit sales account. Debit sales account. no. Debit sir. sale Debit account. drawing Debit sale account. account. Credit stock account. Which one? Debit? C. No. So B, It's A. debit drawing account. It should be A. Debit drawing account and credit purchase account. सर एक बार फोर्थ दोबारा बता दो. फोर्थ सर ये डेप्रिसिएशन है. जब हम लोग डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाते हैं ना, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, तो उसका जो बैलेंस है उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है. Then come to question number 6. According to the convention of consistency, A, correct, very good, ma'am. According to going concern concept, business is viewed as having Indefinite life. indefinite life. Very good. index. According to which of the following accounting and concept, even the proprietor of the business is treated as a creditor to the extent of his capital. Business entity Business entity concept. Very good. According to which of the following concept, in determining the net income from business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue. Correct. Very good. Matching concept. Very good. Valuation of a stock at lower of cost or net realizable value is an example of.
B. C. Which one? B. Realization. No. Someone has said B. Correct. Conservatism concept. During the life of an entity, accounting produce financial statement in accordance with which of the following accounting concept? Accounting period. Accounting period. X Limited follow the written down Follow? value. पप्पा सचीला फोन करता का सची आली खाली Sir, please focus on the concept. X Limited follow the written down value method of depreciating machinery year after year due to C. 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 Correct. Very good. Consistency. Which of the following will not be recorded in the books of accounts? Quality of Correct. Quality of Quality staff. of staff. Very good. quality of Bookkeeping mainly is mainly concerned with financial C. Wording financial. no, B. no, B. B. no. All the All the above. D. All the above. D. above. Which is the last step of accounting as the process of information? preparation of final statements. No, no, D. D. no, Sir, it's the analysis and no, interpretation. no. Last step, last step. C. We are the C. last. Correct, C. correct. Also- Communication of information. Last step. Clear, everyone? Now come to the main part of the accounting. सर You ये जो understand? MCQ है नॉर्मली यही रिपीट होते हैं या कुछ चेंज होके आते हैं? सर ये कंसेप्ट आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए बनाया गया है. आपका कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी एमसीक्यू क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जैसे भी एमसीक्यू आए वो तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे ना. अब आप एमसीक्यू रटोगे थोड़ी, रटना है क्या सर? बताओ, रटना है या कंसेप्ट समझना है? ये समझना है सर. ये क्यों, मतलब ये सेम आए या क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने लोग देखो, आप लोग इस प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड वैल्यू प्लेटफॉर्म में जा रहे हो. इन दैट वी हैव टू क्लियर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. पूरा प्रैक्टिकल चीजें समझ आनी चाहिए. देन वी कम टू द rules of debit and credit by modern. Agar if you understand this slide now, and you understand whole the accounting part. Be clear. This slide is very very important. Modern approach, rules of debit and credit. We have a type accounts. One is the asset, second is the liability, third is the capital, then revenue and gain, and expenses and losses. Example of the asset: land and building, machinery, goodwill, cash, stock, intangible asset, anything. It may be anything. No? Asset would be anything. Other than these three items, we have a lot of assets there. Any asset. When these assets are coming in your business, when these assets are coming in your business, then we have to record as a debit. When this asset is goes from your business, then we do the credit. Simple. When this asset, when land and building purchasing for a business purpose, then you have to debit. And machinery is purchased. Friends, this is the very, very, very important concept to be learned by everyone because accountancy is the weakest part of engineers DNA. तो अगर आपको ये टेबल पूरी तरह से आपको समझ में आ गया, then accountancy will be nothing for examination purpose as well as for daily use. Accountancy is very, very important for every person, every human being, every businessman, every professional, every engineer, every valuer. If you are able to understand the language of this concept, then you will be able to follow the accountancy. As a valuer, you have to you have to read various statements and you have to verify various statements and balance sheets before submitting your valuation reports. Hence, it is very, very important to understand the basic things behind this accountancy and bookkeeping. Yes, sir. Please continue. Sorry. Thank you. Then we are discussing when the land is coming to a business or machinery is coming to a business or goodwill coming to a business, then simple you have to do the debit. And in reverse sense, when the land is going, suppose you are selling the land, then you have to do the credit. Then machinery, when you sell the machinery, then you have to do the credit. Goodwill, credit.
Suppose cash is coming your business, then what's it? Cash is coming, then debit. Cash is going from the business, that should be credit. Intangible asset coming in your business, that debit. Intangible is going to your business, that is credit. Then we have a going to the liability side. We have a bank overdraft, creditor, outstanding expenses, bank loan. When this type of concept, what is a bank overdraft? You know very well. What is a creditor? You have to purchase. Suppose you have purchased anything, that is a creditor. Outstanding expenses which are pending to pay, that is outstanding. Bank loan, when you're taking the bank loan, when this type of component is there, then we have to do the credit. Coming in your business, credit. Going to your business, that is a debit. Earlier what we have done, coming debit, here coming credit. Opposite sense. Asset and सर liability both are opposite. ये क्रेडिट का मीनिंग वही जो उधार है वही है या कुछ और सेम ही चीज है? सेम सर. उधार क्रेडिट का मतलब उधार ही है. We have to write. अपने लोग को अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा. आप पहले समझो, फिर मैं आपका क्वेरी में लूंगा. Then we have a capital. In capital we have a capital is coming to your business, that is a credit. Capital is goes from the business, that is a debit. Revenue gain and expenses. अगर dividend receive हो रहा है, then credit. Interest receiving, credit. Commission receiving, credit. Profit on sale of asset, credit. And dividend paying, if you paying the dividend, then debit. Interest paying, debit. Commission paying, debit. Profit, loss on sale of asset, debit. Similar way, expenses, loss by fire, that is a debit. Audit expense, audit fee, debit. Printing, stationery, debit. Wages, debit. You have to understand when it should be a debit, when should be a credit. First of all, one part. Second part, now we are correlating from whom? Correlating with the double entry bookkeeping. You have to follow the double entry bookkeeping. One should be a debit, other should be a credit. एक डेबिट होगा, दूसरा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट तो मिलेगा नहीं. In that case, suppose land and building, going. Suppose land and building going. In that case, you are putting the credit. As against land and building putting credit, then if you have a बेच रहे हो, then in that case, either you are receiving the cash or the amount should be credited in your bank. Either you are receiving the cash or amount credited in your bank. Then what should be the entry? Bank cash and bank account debit, cash or bank account debit to land and building. First way. Second, if you talk about the liability, suppose liability coming to the bank loan. Suppose you have liability coming to bank loan. Bank loan is should be coming to the credit side. When bank loan is credit, then we have to following the double entry system. Then one should be a credit, debit. Then what should be a debit? Bank loan is coming either in the cash form or either in the bank form. Then cash account or bank account debit to bank loan. When to come to the capital come to the cash form or bank form. Then capital is coming to the credit. Then in cash account to capital account. Double entry system. You have to follow the double entry system. Suppose dividend receipt is a credit. The dividend should be received in the form of bank only, not the cash. And our entry should be a bank account debit to dividend receipt. Suppose we are paying the audit fee. Double entry system, we are audit fee paying in the bank account, not the cash. Then our entry should be a audit fee to bank account. अब बताओ किसको प्रॉब्लम है? सर ये थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल से समझाओगे? Yes, sir. Sorry, but समझ Which नहीं. one? सारा कंप्लीट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक में क्रेडिट नहीं. आप देखो, मेरे बोला, देखो, जब एसेट आपको दिख रहा है, एसेट दिख रहा है आपको. एसेट जब आया आपका बिजनेस में, तब आप क्या करोगे? डेबिट. आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की हो तो डेबिट करोगे. लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है आपका बिजनेस तो क्रेडिट करोगे. कोई भी एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो. सिमिलर वे, कोई भी लायबिलिटी आ रहा है आपका बिजनेस में उसको क्रेडिट कर दो. कैपिटल पूंजी आप आ रही है बिजनेस में, उसको क्रेडिट कर दो. कोई भी आप अर्निंग कर रहे हो, रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी कर रहे हो, उसको क्रेडिट कर दो. सिमिलर वे, एक्सपेंसेस आप कुछ भी कर रहे हो उसको डेबिट कर दो. ये तो समझ आ गया. उसके बाद अपने लोग पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम. आपको डबल एंट्री बुक, कोई भी हम लोग एक ट्रांजेक्शन करेंगे दूसरा अकाउंट दिखाना पड़ेगा. अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर क्रेडिट किया तो डेबिट करना पड़ेगा. सर आपने जो बोला जैसे ऑडिट फीस है तो हाँ, ऑडिट फीस है.
तो ऑडिट फीस में क्या लिखा हुआ है? ऑडिट फीस क्या डेबिट है? लिखा हो डेबिट प्लस आया, ऑडिट फी प्लस लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है। ये तो एक्सपेंडिचर है ना हमारा। हाँ, अभी तो ऑडिट फीस तो मैं एक्सपेंडिचर तो बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या था? ऑडिट फीस का ना? हाँ सर, वो मतलब डेबिट प्लस में जाएगा, उस क्रेडिट माइनस किस में जाएगा वो? आप क्या ये आप ऑडिट फी आपने पे किया तो डेबिट, ऑडिट फी आपके पास आया क्रेडिट। सर आप ऑडिटर हो, आपके पास ऑडिट फी आया तो क्रेडिट, आपने ऑडिट फी पे किया डेबिट। सर if you allow me, can I interrupt you? यस सर, श्योर। Sir, if you allow, can I elaborate at this point in one or Which two one? lines Which one? regarding this concept of debit and credit? Yes, sure, no issue sir, please come forward. But this is for all the participants. If you can keep it in mind 2 or 3 lines, then it will be really helpful for you for understanding this concept, which has recently very beautifully explained by our faculty. If you keep it in mind some rules, that debit is the receiver. लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इन 2-3 लाइन से आपको सर सारा वो concept- सर वो कंसेप्ट बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, आप गोल्डन रूल जा रहे हो। गोल्डन रूल, चलो ठीक है सर, गोल्डन रूल इज अ डिफरेंट, मॉडर्न अप्रोच इज डिफरेंट। वो आप जाओगे तो आप कभी ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं मार पाओगे। आप क्योंकि आप लोग इंजीनियर बैकग्राउंड के हो, तो उसको आप गोल्डन रूल को पहले इंटरप्रेट करना पड़ता है कि वो कौन सा आइटम है। यहाँ तो गोल्डन रूल मैंने बताया नहीं, यहाँ पर मैंने 5 हेड बता दिए। इस 5 हेड को खाली याद रखना है। गोल्डन रूल को आपको, आप पता नहीं कौन सा बैकग्राउंड से हो, गोल्डन रूल को लिख मत करने से आप एंट्री कभी नहीं बना पाओगे। सर मैं यू आर तो नॉट फ्रॉम द अकाउंटेंट साइड। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट, यार यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो वेरी वेल ना। सर मेरा क्वेश्चन ये है, लैंड एंड बिल्डिंग और हमने जो परचेज किया वो हमारा डेबिट हो गया सर। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज का डेबिट हो गया, करेक्ट। यदि हम इसको सेल करते हैं और कैश हमारे पास आया तो क्या क्या होगा उसका? देखो, आप सेल करते हो, सेल करते हो, आप उसको ट्रेड कर दो। सर पहले सिंपल समझो, अगर आप सेल किए हो तो क्रेडिट हो गया, जी हुआ क्रेडिट। आप अपने लोग को समझना है कि आपको डबल एंट्री सिस्टम करना है। आपने एक तो क्रेडिट कर दिया, किसी को डेबिट तो करोगे ना। जी 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 अभी आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, सेल करने के बाद आपके पास अकाउंट में पैसा आया होगा, नहीं तो कैश लिया होगा। जी जी। अगर अकाउंट में पैसा आया तो उसको डेबिट कर दो, या कैश में लिया है तो उसको डेबिट कर दो। सर कोई 2-4 केस स्टडी बना के एग्जांपल थोड़ा समझा दो सर, तब ज्यादा अच्छा सर आप लगेगा। बताओ किस 2-4 केस स्टडी, आप बताओ इसमें क्या नहीं समझा। बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है। आप कौन से जो कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को बताओ ना, मैं क्लियर करूंगा। तो ये सारा ही कंफ्यूजन लग रहा है सर, समझ नहीं आया नहीं, सारा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। भाई सारा कंफ्यूजन कर रहे हो तो आपको इसमें फीडिंग चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, एक दो चीज कंफ्यूजन हो सकता है। आप पहले समझो, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। देखो ना, आया तो डेबिट, यहाँ पर आया तो क्रेडिट। देखो सिंपल लिखा हुआ है ना, प्लस साइन। यहाँ पर आया तो क्रेडिट, यहाँ आया तो क्रेडिट, यहाँ पर आया तो डेबिट, लिखा हुआ ये है सब। कैपिटल कैपिटल अकाउंट है, थोड़ा इसका बताओ एक बार सर। अभी डेबिट देखो सर, देखो सिंपल समझो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कैश डालोगे उसमें, डालोगे नहीं डालोगे? हाँ डाल दिया सर। यार, अपने लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था अभी, सर पढ़ा। पढ़ा ना। उसका हाँ मतलब जी। क्या था कि दोनों सेग्रेट करना है, आप ओनर ओनर अलग है, ओनर बिजनेस अलग उसको है। लोन पे दे रहा है बिजनेस को। करेक्ट, आपने आपने खुद ही बोला है ना, लोन पे दे रहा है, अभी आपने खुद बोला है। यस तो सर। अभी देखो, अभी जो कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपका आया क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सिंपल देखो, कैपिटल आया क्या लिखा? क्रेडिट किया ना। हाँ या ना तो बोलो सर। ये बिजनेस का क्रेडिट हो गया। ये आपका कैपिटल, आपने पूंजी लगाया है तो कैपिटल हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो आपने कैपिटल लगाया किस फॉर्म में लगाया होगा? कैश या बैंक में लगाया होगा ना। कैश कैश हाँ। कैश में लगाया तो कैश को डेबिट कर दो ना। डबल कैश एंट्री से कैश डबल, ओनर का डेबिट हो जाएगा ना। हाँ कैश होना का डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आई? कुछ हद तक आई है सर, सर बाकी कोई दो चार चीज पूछो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ। सर जब वो इसमें से जो सर कैपिटल अकाउंट में जो भी वन बाई आपने वन प्लीज। हाँ, यस। जो अभी आपने कैपिटल अकाउंट में जो बताया है, हम्म। तो जो उन्होंने अभी खरीदा है मार्केट से तो वो डेबिट हो गया।
पर जब वो कैपिटल अकाउंट बेचेंगे खरीदना नहीं पड़ता, कैपिटल अकाउंट कहाँ से खरीदा? कैपिटल कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी होता है, पूंजी। हाँ, बिजनेस में बिजनेस करने पूंजी, के लिए पूंजी ली उन्होंने। हाँ पूंजी, और पूंजी ली लेने, आपने, आपने से पूंजी आपने बिजनेस करोगे तो आप कैश तो डालोगे ना उसमें। हाँ लिया तो ये डेबिट हुआ। हाँ, पर जब हम किसी को अब आगे हम जिसको बेचेंगे तो वो फिर क्रेडिट हो जाएगा। क्या चीज बेचोगे? जो हमने लिया है मार्केट से, ये कोई सामान लिया या मार्केट तो कैपिटल के साथ क्यों लिंक कर रहे हो? वो तो एसेट का पार्ट हो गया ना, आप कैपिटल के साथ लिंक क्यों कर रहे हो? सामान सर इधर है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, देखो सामान लिखा हुआ है इसमें, आप इधर क्यों जंप कर रहे हो? इधर तो खाली मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल की, और कुछ लिखा हुआ है इसमें? सर कैपिटल और एसेट में मतलब उल्टा क्यों है, ये सेम नहीं होना चाहिए? कैपिटल, जैसे मैंने पूंजी डाली तो वो क्रेडिट हो गया कंपनी को। पूंजी आपने, अरे सर आप अपने तरफ से देखो ना, अपने तरफ से आप क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दोनों अलग है, आप बिजनेस अलग है, आप अलग हो, आप अपने तरफ से क्यों ले रहे हो? आप मैं बिजनेस के अपने साथ सोचो। पर्सनल सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में डाल रहा हूँ सर हाँ अकाउंट। तो आप किसी को उधार दे रहे हो ना, हाँ सर, उधार दे रहा आप हूँ। आप किसी को उधार दे रहे हो ना, यस सर। तो आप उधार दे रहे हो तो क्रेडिट होगा ना। नहीं, वो बिजनेस का क्रेडिट होगा ना। बिजनेस, मैं तो वही बन रहा हूँ, आप बिजनेस परस्पेक्टिव तो क्रेडिट होगा ना, ये तो लिखा हुआ क्रेडिट, आप जो और बोल रहे हो वही तो लिखा हुआ है सर। अगर अगर मैंने बिजनेस में लैंड खरीदी, मेरे को फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदनी है। देखिए, बिजनेस में लैंड आया है तो डेबिट कर दो, अगर बिजनेस के लिए लैंड आया है तो आप ऐसे भी दोगे ना, या कैश दोगे या बैंक दोगे। अगर कैश दोगे तो कैश को क्रेडिट कर दो, बैंक दोगे तो बैंक को क्रेडिट कर दो। मान लो मैंने 2 करोड़ का लैंड लिया बिजनेस में। ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है तो डेबिट हो रहा है। सिंपल है, सिंपल तो मैं बोला, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, लाइबिलिटी आ रहा है क्रेडिट, जा रहा है डेबिट। एनी डाउट? नो? क्लियर है ना सबको, यस और तो नो? यहाँ सर प्लस माइनस सर यही शो कर रहा है ना सर कि प्लस सर माइनस क्या शुरू कर रहा है? प्लस सर मतलब आ रहा है और हाँ, माइनस मतलब जा रहा जा है। रहा है, करेक्ट, यस हेलो सर, यस यस सर। सर, ये समझो कि एसेट खरीदा तो हम्म, कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा और कैश को क्रेडिट होगा, इज इट? और एसेट, रिवर्स, मेरे को समझ नहीं आया, एसेट अकाउंट खरीदा तो, suppose we purchase the land, हाँ then करेक्ट, it will be credited to the capital account. कैपिटल में क्यों जाना है? आपने परचेस किया है ना हाँ, लैंड, तो इधर आप इधर क्यों भाग रहे हो सर? इधर, अब इधर लैंड किधर लिखा हुआ है? एसेट में लिखा हुआ है ना, कैपिटल थोड़ी लिखा हुआ है। अच्छा। तो तो आप लैंड परचेस किया है तो लैंड आपके पास आ गया, लैंड जब परचेस किया उसके पहले कुछ पे तो करोगे ना, यस, बैंक से पे करोगे या कैश से पे करोगे, कहीं से पे सर करना है ना आपको। सर ये सभी लोग ना कैपिटल और एसेट में कंफ्यूज कर रहे हैं। कैपिटल में आपने बिजनेस चलाने के लिए जो पूंजी निवेश किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। राइट। लैंड इज नॉट अ कैपिटल, लैंड इज अ एसेट। ओ, कैपिटल का मतलब है जो आपको बिजनेस इनिशियल चलाने के लिए पैसा चाहिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मीन्स पूंजी, पूंजी मीन्स कैश और कुछ किसी भी फॉर्म में सॉरी, ओके, तो दैट सर इज यदि एसेट। यदि हम ओके, बैंक से क्लियर क्लियर। सर सर यदि हम बैंक से लोन लेके एसेट खरीदते हैं तो? बैंक से लोन लेके एसेट खरीदते हो, ये अच्छा जी क्वेश्चन है। जी अभी देखो, बैंक से आपने लोन लिया तो जी, क्या हो गया? क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ये। ये तो क्रेडिट हो गया। अभी आपको डबल एंट्री सिस्टम में एक तो डेबिट करना है। जी अब क्या डेबिट होगा? आपके एसेट खरीद रहे हो तो एसेट जी को डेबिट कर दो, जी। हो गया डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? एसेट को प्लस हो गया ना सर ये? क्या? यदि हम बैंक से लोन लेके एसेट खरीदते हैं तो प्लस हाँ, डेबिट हो गया ना जिसको क्या एसेट। डेबिट हो, लैंड, हाँ एसेट डेबिट हो गया, वही तो मैं, आप तो बोले तो वही तो लिखा हुआ है सर, जी सर। करेक्ट। ये क्रेडिट भी पॉजिटिव, डेबिट भी पॉजिटिव। कहाँ लिखा हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट पॉजिटिव? लायबिलिटी सर में ये सर, आया है और गया है, अगर इसमें लायबिलिटी में माइनस हो जाएगा। हाँ, इसमें आया है तो डेबिट, इसमें आया है तो क्रेडिट, इसमें आया है तो क्रेडिट, इसमें आया है तो क्रेडिट, इसमें आया है तो डेबिट।
अगर जो सर बता रहे थे गोल्डन रूल, अगर वो पढ़ोगे ना सर, वो तो फ्रेम ही नहीं कर पाओगे एंट्री। सर ये एक बार एरो और जो प्लस माइनस आपने लिखा है, ये दोबारा बताओ सर एक बार। एरो सर, ये ना, ये आ रही है चीजें तो डेबिट, लैंड बिल्डिंग जा रही है तो क्रेडिट। बैंक लोन आ रहा है बिजनेस में, क्रेडिट। तो बैंक ये लोन को आप, सर क्रेडिट के साथ माइनस प्लस जो लगाया है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना? हाँ वैसे लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं है। उसका आने के जाने का है। तो इसमें आ रहा है वो डेबिट, जो ये जा रहा है क्रेडिट, देखो माइनस। इसमें जो आ रहा है प्लस, इसमें जो जा रहा है माइनस। ये आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस, इसमें आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस, इसमें जो आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस। नहीं, आ रहे, मान लो कैपिटल अकाउंट है, जो आ रहा है वो डेबिट नहीं है? जब तक सर इसमें आप लिखा हुआ क्रेडिट, आप डेबिट कैसे बोल रहे हो? इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है ना। देखिए तरुण जी, प्लस का मतलब है आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में प्लस हो रहा है मींस आ रहा है, तो क्रेडिट लिखा हुआ है वहां पर, सिंपल। अगर जा रहा है तो माइनस है। आपके आपकी जेब से कोई चीज जा रहा है तो डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट के नीचे देखिए, प्लस का मतलब है आ रहा है, माइनस का मतलब है जा रहा है। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, इफ एनीथिंग इन कैपिटल अकाउंट, if anything is coming inside then it will be credited, if anything is going outside minus, if anything is going outside from your pocket then it will be debited। माइनस और प्लस का मतलब है आ रहा है, प्लस का मतलब, माइनस का मतलब जा रहा है। तो प्लस और माइनस के बेस पे आपको क्रेडिट और डेबिट करना है। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। सर एसेट में और भी कुछ होता है क्या? बहुत लैंड अभी बिल्डिंग बताया ना, कैश होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, पूंजी, पूंजी जो भी कुछ भी हो सकता है ना आपकी। आपकी पूंजी कुछ भी हो सकती है सर। पर रांची को ला रहे हैं, देखिए क्या है। ठीक है, देन कम टू दिस पार्ट। See, on January 1st, 2015, US company sold good to customer cash $25,000। तो फिर क्या सेल किया? अगर सेल किया तो क्या हुआ? एंट्री क्या हो जाएगा अपने लोग का? कैश आया, कुछ चीज सेल करोगे तो एसेट आ रहा है, तो एसेट क्या है? कैश। कैश आया, किस डबल एंट्री सिस्टम है, तो हम लोग को एक तो डेबिट तो कर दिए, दूसरा क्रेडिट भी करना पड़ेगा, एंड वी हैव पुट दी सेल। देन वी हैव टू क्रिएट दी लेजर। लेजर भी अब दो लेजर कर, एक कैश का लेजर बना है, एक सेल्स का लेजर बना है, दो लेजर बन गए। तो लेजर, टाइप ऑफ लेजर वी हैव सेल्स, परचेस, जनरल, थ्री टाइप। देन सी दिस पार्ट, व्हेन यू पुटिंग द कैपिटल, अभी बनाया था कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड किया है, तो कैपिटल क्या था? क्रेडिट था, कैपिटल क्रेडिट था, तो उसके आगे में कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया? कैश को डेबिट कर दिया, कैश टू कैपिटल। सिमिलर वे, व्हेन यू परचेज द फर्नीचर, फर्नीचर या एसेट, एसेट का, तो क्या अगेंस्ट में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, then should be a something credit, then we have put to the cash। when you purchase the good, purchase to cash। when you payment the salary, salary आप पे कर रहे हो, then salary क्या expenses, sorry, salary क्या expenses, then we have put it the salary debit, against you have paid the cash। then we have made sale on cash, made sale, made being sale made against cash। तो आपने कुछ बेचा है, तो बेचा है तो क्या हुआ? आपके पास कैश आएगा, कैश टू सेल्स। सर थोड़ा स्लो, सर एक थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करो सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या चीज कंफ्यूजिंग? सर सर वो आप, क्या चीज कंफ्यूजिंग बताओ? सर थोड़ा स्लोली एक एक मतलब एक एक केस बताओ सर, किस में क्रेडिट हो रहा है, किस में डेबिट हो रहा है। किसमें डेबिट होना, किसमें, ये आपने, ये आपका जो बेस है, ये बेस को आप लेके बैठोगे और साथ में इसको कोरिलेट करोगे तभी समझ आएगा कि आप सिंपल, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? कैपिटल क्रेडिट। देखो कैपिटल क्या था? क्रेडिट था, हाँ या ना? सर जिसका क्वेश्चन था वो हाँ या ना बताएं, हाँ जी है या सर। नहीं? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डेबिट, डेबिट लिखा हुआ ना, एसेट डेबिट। देखो यहाँ एसेट है, यहाँ फर्नीचर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। सिमिलर वे, अगर हम लोग परचेस किए तो परचेस का नाम नहीं दिया है, कुछ भी परचेस किया है तो कहाँ जाएगा? डेबिट। ऊपर वाला सेम कोर रेट है। खर्चा, ये सैलरी है, तो सैलरी देखो यहाँ पर आ गया एक्सपेंसेस, वेजेस या सैलरी हम लिख देंगे। अगर सैलरी लिखे तो क्या है? डेबिट। लिखाओ डेबिट सैलरी, हाँ या ना बताओ? सर एक बार
अगली स्लाइड पे जाना सर। इसमें से जैसे फर्नीचर खरीदा है तो 75,000 का हमने डेबिट कर दिया और कैश में क्रेडिट कर दिया। ये उल्टा नहीं होना चाहिए सर? फर्नीचर आपके पास आया है इसीलिए वो डेबिट में आया, एसेट है वो। आप कब समझने की कोशिश करो, मैडम समझ गई है। कैश आप का फर्नीचर आपके पास आया है तभी तो आपके पास डेबिट किया ना। कैश आपसे चला गया इसीलिए वो क्रेडिट में जाएगा। कैश चला गया, क्रेडिट में चला गया। चलो सर, मैं ट्रांजेक्शन कैश अच्छे से से फिर पॉसिबल। समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बैठ के शाम। कोशिश करना पड़ेगा ना, फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा लगेगा। टाइप ऑफ लेजर्स के ऊपर बोलिए थोड़ा। टाइप ऑफ लेजर, ये सर ये हाँ, डिफरेंट टाइप सेल्स लेजर है। परचेस सेल्स जनरल परचेज लेजर। जनरल, ओके डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर है। सर सैलरीज डेबिट में कैसे चलेगी? सैलरीज तो हम लोग किसी को पे कर रहे हैं, वो तो हमारे से चली जाएगी सैलरी आप बेसिकली पे हमारे। कर, सैलरी रिसीव सैलरी एक कर खर्चा रहे। है ना, सैलरी तो हाँ खर्चा है जी। ना। हाँ जी। तो ये देखो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेजेस लिखा हुआ, वेजेस। तो सर वो हमारे से तो चली गई ना, हमने तो किसी और को दे दिए, जैसे हमने आप नीचे सैलरी अगर दिए हो ना, आप सैलरी किस किस फॉर्म में दिए हो सैलरी? कैश में या बैंक क्या अकाउंट में डाल किसी दो। फॉर्म में दिए हो ना, तो इसमें तो वही लिखा हुआ है, देखो ना। सो डेबिट तो वो हुआ ना जो हमारे पास आया है। हाँ डेबिट, अभी देखो ना, अभी देखो आपका सैलरी क्या खर्चा था, आप हाँ किस फॉर्म जी। में दिए हो सैलरी, कैश या बैंक, कैश या बैंक में, तो कैश क्रेडिट लिखा हो तो क्या लिखा हो तो क्रेडिट। ठीक है सर। देन सर भी अगर आप, ये अगर सर यही सर ये कंसेप्ट। अगर अपन बाय अकाउंट देते तो क्या वो डेबिट नहीं होता क्या, वो भाई अकाउंट होता, क्रेडिट भाई होता? अकाउंट देते तो अब क्या होता, सैलरी तो डेबिट रहता, कैश के बदले बैंक हो जाता। आप कैश ना देके अकाउंट से देते तो बैंक हो जाता ना। क्लियर? सर सैलरी तो माइनस हुआ हमारे उसमें से। इसमें से एग्जैक्टली। यदि हमने किसी को सैलरी दिया तो हमारे उसमें से लेस हुआ ना अमाउंट। में सैलरी दिया तो आपको सैलरी, सर आप पैसा दियो ना, पैसा, जी। पैसा दियो, किस फॉर्म में दियो, किसी फॉर्म में दियोगे ना। यहाँ कैश और चेक। कैश तो ये तो दिया हुआ है आपको, माइनस हो रहा है तो ये क्या है, कैश तो लिखा ही हुआ है। सर उसमें प्लस दिखा रखा ना जी। प्लस किस सर फॉर्म में सैलरी, दियो, सैलरी के फॉर्म में दियो ना। वो जी। एक सैलरीज अकाउंट वो आपका हुआ ना, कैश वाला हुआ जो आपने दे दिया, वो इसीलिए क्रेडिट में हाँ, लिखा है। तभी क्रेडिट में लिखा है। समझना पड़ेगा सर, ये पेंशन स्लाइड को, ये उसके स्लाइड को प्रिंट निकालना और इस बिल्कुल। स्लाइड को प्रिंट निकालना, तब समझ आएगा। देखिए सर यहाँ पर सैलरीज जो अकाउंट है यहाँ ना, पर वो जो लिखा अकाउंट हुआ है ना, दैट इज द ऑपरेशन। अकाउंट नेम। उस अकाउंट यस। के लेजर से वो माइनस या प्लस हुआ है, आपके करेक्ट। लिप से नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको बिल्कुल। उस फॉर्म में जाकर सोचना पड़ेगा एज अ अकाउंटेंट, अकाउंट्स प्रोफेशनल, जैसा अभी तेजी ने बताया। जी यस सर। जी। देन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर, कैश लेजर, कैश लेजर, कैपिटल लेजर, फर्नीचर लेजर, सारे लेजर बने हैं। तो इसका लेजर, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको खाली पता चलना है लेजर होता क्या है। देन लेजर से अपने लोग कहाँ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वी हैव टू जनरल, देन लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? A trial balance is a bookkeeping worksheet like account that reflect all credit and debit of all the ledger account. जितने लेजर अकाउंट बनाए थे उसके डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग डालेंगे कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑन द बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट कहाँ से बनाएंगे, इसके बेस में। तो ये जितने भी डेबिट है, क्रेडिट है, ये कहाँ से फिगर है, लेजर से, और ये दोनों मैच करने चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट, तभी ट्रायल बैलेंस, अप टू ट्रायल बैलेंस और अकाउंट इज रेडी। देन कम टू फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है? Final account which is prepared at the last stage of accounting cycle. Final account show both the financial position of the business along with the profitability. They are used by external and internal parties of the various purpose. In final account हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर अपने को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है देन वी हैव टू क्रिएट द ट्रेडिंग अकाउंट। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वी हैव टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ये कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, जितने भी खर्चा इसमें डाल दिया, जितना सेल हुआ डेबिट क्रेडिट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, जितने भी खर्चे हैं डेबिट, जितने भी इनकम है क्रेडिट। लास्ट में क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट। इसी के ऊपर टैक्स टैक्स बनता है। देन वी कम टू द बैलेंस शीट।
Balance sheet is prepared to disclose the financial position of the company at a particular point, particular period नहीं, particular point. Profit and loss particular period का है, 1 अप्रैल to 31 मार्च. ये particular point है, 31 मार्च का है. यहाँ लिखा हो ना, particular as on 31 December, particular period का point का है. The future performance of the company is anticipated in the terms of profitability and the cash flow and make important economic decision. सेक्शन कौन सा सेक्शन है बैलेंस शीट में? एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी. एक एसेट हो गया, एक लायबिलिटी हो गया, एक ओनर इक्विटी हो गया. कम टू दिस पार्ट. Which statement about the rules of debit and credit is true? Please come forward. Account receivable debit. सर लास्ट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए कि लायबिलिटी एसेट्स तो तीसरा क्या था वो स्टॉक्स कौन सा? के पहले हाँ ये वाला स्टॉक होल्डर इक्विटी ये क्या चीज रहती है सर? ये हाँ स्टॉक होल्डर इक्विटी ओनर इक्विटी सेक्शन. हाँ सर ये हाँ ये सर आपका पूंजी को कहाँ पर दिखाते हैं? यहाँ दिखाते हैं ना पूंजी को. ये पूंजी है सर. Which statement true rule of debit and credit is true? ट्रू कौन सा है? अकाउंट रिसीवेबल अगर घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट. एंड बढ़ेगा नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट. नो, अकाउंट रिसीवेबल नॉर्मल बैलेंस तो डेबिट रहता है. अकाउंट पेबल इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंड नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट. अकाउंट अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट. विच वन? बी. करेक्ट, वेरी गुड मैम. द लेजर इज अ लेजर क्या है? Group of account that which one? Correct, very good. When recording transaction in 2 or more account and total of debit and credit are equal is called double entry bookkeeping. Correct. Very good. Account receivable is a debit. As the total debit posting $1900, credit posting 1100, and balance would be a 800. 800 what? 800 credit. No, Credit. debit ना. हाँ जी. How so? सर दिस इज अकाउंट रिसीवेबल इज डेबिट ना. अगर डेबिट ये डेबिट है, डेबिट से क्रेडिट माइनस करोगे, डेबिट ज्यादा बड़ा बैलेंस है तो डेबिट ही बचेगा ना. बचा तो वो डेबिट हुआ. Yes, yes. The beginning balance in the computer account was $2,000. The company purchased additional $1,000 and balance of the account should be a computer is asset. Asset is a debit. Debit of Debit 3,000. 3,000. Very good. Office supplies as a normal starting balance is $75. There were debit posting of $80 and credit posting $60 during the month. The ending balance would be a exactly 75 debit postings of which 80. one? Normal starting on Sunday, they were debit posting to 80. Posting of 60 during the month and 95. Office supplies are debit. 131 debit. 55 55. The 90. Credit. They are 55. 75 or 80. How much? 55 credit. 55. 55. सर 95 होगा क्योंकि 75 नॉर्मल बैलेंस था. 75 plus 80. How much? Debited 80 minus 155. 155 minus 60. How much? 95. तो 95 हुआ. Correct. The beginning balance in the bank. 95 debit or credit? Debit. डेबिट रह गया हमारे पास. The beginning balance बैंक क्या है? 3,500. Additional bank balance कितना है? 2,000. Check was written totally 2,500. Cash balance कितना है? हो जाएगा ये. 3,500 plus 2,000, 5,500. D. Correct. D. Which entry record the investment of cash by John, owner of sole proprietorship? Owner of sole पहले तो कैपिटल लगाएंगे. No. Debit John. C. No. A. D. कैपिटल आपने पढ़ा था ना, कैपिटल टू कैश टू कैपिटल लग दिया. The owner invest personal equipment in the business. Personal equipment to be recorded. पहले तो डेबिट होगा.
डेबिट क्या होगा? इक्विपमेंट। Number A. Which one? A. And credit capital, D, sir. D, D. No. Correct. D. B. Then the account payable account is an account payable क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? The account payable account. क्रेडिट। Credit. क्या होगा? अकाउंट पेबल इज द लायबिलिटी एंड नॉर्मल Liability. क्रेडिट। Normal credit balance. करेक्ट। अकाउंट पेबल नॉर्मल स्टार्टेड बैलेंस इज $800, posting debit posting $600, credit posting $300, then the end posting account payable is a credit balance, credit 800 and credit 300, 83 1100, 500 क्या credit, credit. 500 credit. correct. Which of the best explain the fixed asset? An asset bought to use in the business, correct. D. A. A. Supplier personal account is known as which account? Which ledger? Sales ledger. No, general ledger. General ledger. सेल में सेल्स आएगा, परचेस में परचेस आएगा, और कहीं पे जाएगा तो general ledger. Now we part a cost accounting. It is a process via which we determine the cost of good and services. It involves recording, classification, allocation of various expenditure, and creating a financial statement. This data is generally used in financial accounting. So in element of cost, we have to see the element of cost. We have a 3 element: the material, labor, and expenses. And we have a direct, indirect, and direct, indirect. 3 expenses should be direct, and indirect should be put in the production overhead, administrative overhead, or sales or distribution overhead. किसी में भी जा सकता है. Then this part is very important. Difference between fixed and variable cost. आपको difference समझ आना चाहिए. कौन सा fixed है, कौन सा variable है. The fixed cost, the cost which remains same regardless of the volume produced, is a fixed cost. The cost which change in output is considered variable cost. Nature time related, nature volume related. Volume. Fixed cost is the definite. They are incurred whether the unit are produced or not. Variable cost incurred when they are unit are produced. Unit cost, fixed cost change in unit as the unit produce increase, fixed cost per unit decrease, vice versa. So the fixed cost per unit is inversely proportional to the number of output produced. Variable cost remains same per unit. Example, fixed cost कौन सा example है? Depreciation, rent, salary, insurance, property tax, all are the example of fixed cost. Material, consume, wages, commission of sale, packaging expenses, GST, all are variable income. Then we have a break-even analysis. Break-even analysis with the margin of safety. Break-even point unit. अगर यूनिट की बात किया जाए, break-even point कैसे कैलकुलेट होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. Calculation of break-even point in sales volume. Break-even point in value, that is a fixed cost divided by contribution margin ratio. Contribution margin ratio is the contribution margin per unit divided by sales price per unit, or contribution margin ratio is equal to sales price minus variable cost divided by sales price per unit. This you have to remember the formulas. Then application of the break-even analysis. कैसे आप application करोगे? The application in the cost calculation, or we can application the budgeting. जब आप budget और targeting set करते हो, or it is a motivational tools. Then come to the MCQ. Process costing is the process costing कहाँ पर apply करेंगे? Qualifying firms. Correct. Very good. Direct expenses are also known as. I'm sorry to say, but कुछ समझ नहीं आ रहा है तो MCQ Process costing is hospitals. क्या बोल रहे मैम? क्या बोल रहे? आप क्या बोल सर रहे? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ MCQ के रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं. क्या समझ नहीं आया आपको? सर आप जो ऊपर आप समझा रहे थे अभी, जो क्या ऊपर की चीज? 2-3 स्लाइड्स है, that was too much fast, so was not able to understand anything at all. आपको Yeah. डिफरेंस बिटवीन समझ नहीं आया? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट Yes sir. समझ आया नहीं? सर नहीं आया है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स रहता है. आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी या सैलरी या रेंट, सारे फिक्स रहते हैं. आप प्रोड्यूस करो या ना करो, आपको देना पड़ेगा.
वेरिएबल कॉस्ट मतलब आप जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसके रास्ते आपको देना पड़ेगा। क्लियर? देखो यहाँ पर देखो, फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस इन यूनिट, दैट इज कॉस्ट प्रोड्यूस इंक्रीज, और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, वाइस वर्सा। इसमें देखो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कि वो वेरिएबल होते रहता है। मैडम क्लियर हुआ? Yes, sir, a little bit. लिटिल बिट। और ये दिस इज फॉर्मूला, देखिए, फॉर्मूला। आपको अकाउंटेंसी समझने के लिए अपने माइंड को इंजीनियर बाहर निकाल के अकाउंटेंट को बिठाना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर को अंदर बिठा के आप अकाउंटेंसी समझेंगे तो कभी भी समझ नहीं लगने वाली, पूरा बाउंस होगा। देर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी विच कैन नॉट कन्फर्म इन इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग में हमें जो नजर आता है वो दिखता है, लेकिन अकाउंटेंसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमें उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स, अकाउंटेंसी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 3 इयर्स का सब्जेक्ट है जो कि अकाउंटेंसी या उसके सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, एंड दैट वी हैव टू कंप्लीट इन 1.5 आवर्स, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स मीन्स 1.5 आवर्स के अंदर हमने ये कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा आपको अपने माइंड से इंजीनियर को बाहर निकाल के अकाउंटेंट को बिठाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। This is a break-even analysis. Already we have discussed. Come to the direct expenses are also known as which one? Overhead expenses. Overhead. Chargeable expenses. Very good. Madam said chargeable. Warehouse rent is a part of which cost? Distribution cost. Distribution cost. Correct. The break-even point in unit represented by the equation. And fix. Already we have discussed that. In unit, fixed cost divided by contribution per unit. Then we have a margin of safety can be expressed. How it is expressed? It is expressed between the difference between the actual output and the break-even point. Break-even point. This much you have to know. Thank you. This much you have to सर know ये for this लास्ट scoring. वाला एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दो एक बार। Which one? सर लास्ट वाला 5th। This is a MCQ is based on the formulas. ये जो फॉर्मूला के बेस में है कि जब आप एक्चुअल जो आउटपुट होता है उससे आप माइनस करोगे ब्रेक इवन, तो अपने लोग क्या मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतना हम लोग सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। ठीक है सर। कभी कभी होता है ना कि आपका प्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्शन चल रहा है, जरूरी थोड़ी है कि आपका रॉ मटेरियल हमेशा रिसीव हो। जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है किसी कारण से प्रोडक्शन, किसी कारण से रॉ मटेरियल रिसीव ना हुआ, तो उसके लिए हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के चलते हैं। ठीक है सर। देखिए, आपको अकाउंटेंसी के लिए शीट दिया गया है, स्टडी के लिए है, पूरा का पूरा पीपीटी आपको आज आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा फोल्डर में। थोड़ा सा मुश्किल है, वी कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मुश्किल है अकाउंटेंसी को समझना एज अ इंजीनियर, एज अ टेक्नोक्रेट, क्योंकि अकाउंट्स अगर हमारे डीएनए में होता तो हम सीए या सीएस होते। ये दिस इज नॉट इन आवर डीएनए। तो अकाउंट्स को समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल आपको आएगा, लेकिन 2-3 बार आप इसको गो थ्रू करेंगे, उसके बाद में अगर कोई भी डिफिकल्टी मिलती है देन वी विल टेक अनदर क्लास ऑन द लास्ट डे। अगर आपको लगेगा तो हम ये क्लास आपको लास्ट डे रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा लॉजिक्स के साथ समझने के लिए। थोड़ा सा अकाउंटेंसी के अंदर जाना पड़ेगा, अकाउंट्स प्रोफेशनल बन के सोचना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एज अ बैंकर, एज अ पर्सन, जब आप बैंक की पासबुक लेते हैं तो उसमें डेबिट क्रेडिट लिखा होता है, तो वहां पर वो हमारे लिए नहीं लिखा होता, दैट इज द बैंक्स स्टेटमेंट। तो वहां पर आपको एज अ बैंकर बन के सोचना चाहिए कि ये डेबिट और क्रेडिट है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में आ गया, क्रेडिट हो गया, नहीं, वो बैंकर ने बना कर दिया क्रेडिट और डेबिट। वो हमारे लिए क्रेडिट या डेबिट नहीं, हमारे लिए उसका उल्टा है। एज अ पर्सन इट इज टोटली रिवर्स। लेकिन वो पासबुक जो आपके हाथ में होती है वो बैंक की स्टेटमेंट है, वो बैंकर स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट योर स्टेटमेंट। हम लोग वहीं पर कंफ्यूज करते हैं एज अ इंजीनियर, एज अ कॉमन मैन। तो यही चीजें डिफरेंट है। जब आप थोड़ा सा इसका लॉजिक समझेंगे, 2-3 बार इसको स्लाइड जो जैकी सर ने अभी दिया उनके फोल्डर आज ऐड कर दिया जाएगा, आईटी टीम ने उसको आज ऐड कर देना है उस फोल्डर को।
तो आप उसको 2-3 बार स्टडी करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एवरीथिंग लॉजिक के साथ समझेंगे तो बहुत आसान होगा। लेकिन इमीडिएटली अगर आप चाहेंगे कि 1-1.5 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाए, इट नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट है। टेक्नोक्रेट्स के लिए थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है और नया सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये फाइनल ईयर्स में इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, उसका ही ये पार्ट है, कुछ भी बाहर से नहीं है। और ये 10th या 12th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी का पार्ट था कॉमर्स में। इट इज द सेम थिंग, नथिंग, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। अभी बेसिक अकाउंटेंसी का पार्ट तो उन्होंने टच ही नहीं किया, ना ही हमारे सिलेबस में है। इट इज अ बेसिक अकाउंटेंसी विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 10th एंड 11th क्लास। एम आई राइट सर, जैकी सर? करेक्ट सर, करेक्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको 11th का मेमोरी, 10th का मेमोरी रिकॉल करना पड़ेगा। 10th में ये हमारे ऑलरेडी मैथमेटिक्स में अकाउंटेंसी का पार्ट था, एंड इट इज द सेम थिंग, 100% सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आप किसी भी 10th स्टैंडर्ड की बुक देखिए, वहां पर अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट देखिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए। अदरवाइज जो जैकी सर ने स्लाइड दिए, बहुत 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 एलाबोरेटिव स्लाइड्स हैं, आप उनको एक बार स्टडी करिए। फिर अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगेगा, देन वी विल कंटिन्यू विद द सेम क्लास ऑन द लास्ट डे। यस सर, एनी डाउट? सर देयर आर 2 क्वेश्चंस। सर यस सर। एक तो आपने वो फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन बताया था, उसका आंसर और वो समझ में नहीं आया था, और एक 10th वाला क्वेश्चन, कौन सा? वो स्लाइड में था सर। ये इसमें था। हाँ, इसमें एक फर्स्ट और एक 10th। फर्स्ट में क्या? फर्स्ट में अकाउंटिंग जो फर्निश करते हैं डाटा, किसके लिए फर्निश करते हैं? इनकम एंड कॉस्ट फॉर मैनेजर, मैनेजर को यूज करेगा। फाइनेंशियल कंडीशन इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। तो तीनों के लिए यूज करता है ना वो। आप अकाउंटिंग डाटा दोगे तो मैनेजर तो यूज करेगा ना, उससे फाइनेंशियल कंडीशन भी पता चलता है, और उससे हम लोग का मतलब टैक्स लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर? क्लियर, यस और नो? सर ये बेसिकली बैंक्स के लिए रहता है या किसी पर्सनली यार जिसको? कोई भी इंस्टीट्यूशन, सबके लिए सेम है। और सर एक 10th वाला और एक और। ये आपने लोग पढ़ा था ना, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है? हाँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म require the profit do not require until the realize all the losses should be repaid in the remotely possibility। तो ये assumption है जो अपने लोग का, ये क्वेश्चन है ना, कहाँ है 10th वाला? ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। उसमें बोलना है कि जब आप वैल्यूएशन करोगे स्टॉक का, तो किस बेस में करोगे? बेस क्या है? कुछ तो बेस होगा ना, हमने जो वैल्यूएशन करेंगे उसका बेस क्या है? तो उसमें लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि बेस है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। उसमें बेस में लिखा हुआ है, ये वहां लिखा हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलो या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलो, अभी तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, तो दोनों का नंबर सेम है 2। तो वहां से आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जब भी वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का, तो उसमें कॉस्ट और नेट अपना कितना खरीदा है और आप अभी कितना बेच रहे हो, दोनों में जो लोअर होगा उसी को अपने लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? यस सर। क्लियर एवरीवन? क्लियर ना? यस और नो? यस। ओके सर, शैल वी टेक द ब्रेक सर? संदीप सर? यस सर, यस सर, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड सर, क्योंकि अकाउंटेंसी के बाद थोड़ा सा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जरूरी है दोबारा चलने के लिए। माइंड तो सबका स्टक हो गया, इंजीनियर्स का स्पेशली। इट इज 12। We have a 12:05. Shall we start 12:20? यस सर। सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट शार्प एट 12। सर अभी टी ब्रेक करेंगे 12:20 sir. 12:20. 12:20, ओके, टिल 12:20। वी विल ज्वाइन शार्प एट 12:20। 12:20 पे दोबारा जुड़ेंगे।